We can, yeah, we can go for also insert after any given data, insert before any given data. You try to do it yourself, but remember, inserting after any given data is nothing but first you have to search the number. So after getting the number, then you have to delete. So more or less, the searching algorithm has to be also incorporated while you are writing, like insert at any or after any given data or before any given data. So we can see it later, but you can try it also. But let us start the delete. Similarly, delete can be like delete any given data or delete any given position, something like that. Okay, so we are going to do now delete from or delete data from any given position. Okay. So while inserting data into the array, if you remember, we have done the right shift, and here we are going to do the left shift. So let us see a little bit. Suppose 10, 9, 20, 12, 15, something like this. Now what is the n here? N is nothing but 1, 2, 3, 4, 5. N is equal to 5. And suppose the position is given 3. So I need to delete this data. Need to delete. Okay. Need to delete that data. So we can clearly see that what we are going to do. We are going to do the left shift, like this data will come here. So 12 will replace 20. This data will come here. So 15 will replace 12. Like this, we can go on. And obviously, we'll care about the n also, because n represents the number of elements present in the array. Initially, before doing anything on the array, n is equal to 0. The moment you insert elements, like whatever learned in the previous class, the moment you enter any data, so n is becoming n plus 1, or n is getting increased one by one, that number of times you are entering data. Similarly, you have to also care about whenever you are deleting any data or deletion is successful, you have to decrease the n also, because n represents the number of elements present in my array. So let us start algorithm delete underscore position. So some prerequisite, that is the array. So n, that is the number of elements present, and obviously the position. So you can write in the comments. I'm not writing right now because I need my space a little bit, but you can write in a notebook by giving some comments that whatever the parameters you have taken. Okay. So first of all, one thing I like to tell here, okay, yeah. So here there is something called as underflow. What is underflow, guys? Any idea? What is underflow? Any idea? No, sir. So there is two terms basically. One is overflow and is underflow. Overflow is something if already the declared memory is full. Like suppose you have declared an array of size 10 and we have already stored 10 elements. Now you want to insert more data into that array which is already filled. So obviously it may replace something, that is okay, but I can say that it is an overflow condition because it is already filled and you are trying to put some more data onto that which is already filled. So that is why it is called as an overflow. So here underflow means I do not have any data in the container. The container can be array, the container can be linked list, can be anything. And I want to delete data from it. I repeat, in the memory locations declared, it contains nothing, null, and I want to delete something out of it. So obviously it is not possible at all.
That is called as your underflow. So I repeat, overflow is used whenever the memory is full and you want to put more or insert more. That is overflow. Underflow is if already it is empty, nothing is there, and you want to delete any element out of it. That is called as your underflow. Okay. So first we have to check that underflow here, because delete जब भी करेंगे underflow चेक करेंगे, insert जब भी करेंगे overflow करेंगे. यहाँ इस केस में overflow लिख सकते हैं हम, but basically this is condition to this statement. अगर पोजीशन नॉट एग्जैक्टली यहाँ हमने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि हम पोजीशन पे सारा चीज हम खत्म कर दिए, तो इट इज ओके, बट might be it can be written, but that doesn't mean that our algorithm is wrong. It is just a terminology, you can use it. So how to check for the underflow, guy? Can I have the condition from you? Can anyone tell what is the condition to check underflow in delete in this context? To check the first element like empty or not. How do I check that? What should I write? If sir n0 equals to 0. If n equal to 0, very good. That means it is a underflow condition. That's it. Very good. Display underflow. I can simply write underflow and exit. Nothing to do. So let me write in a comment to make it clear. और आप बाद में इसको रिफर कर सकते हैं. Like if no elements and we need to delete. Okay, so this scenario is called as underflow. Now step 2. So now what I need to check, what I need to check, that is, so the position should be a valid one. Can you tell what are the invalid position condition here? So negative values or like zeros. Zeros, ठीक है, जीरो भी एक हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है. 5 And and 6. also this and this place has invalid position or not? Yes, sir. 5 and 6. Yes, sir. Because they have like no values stored. Yes, there are no values, so nothing to delete here. And what are these conditions? You can say that if 1, 2, 3, 4, 5 and n equal to 5 here, if position is more than n plus 1, then obviously they are invalid position. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And as you said, negative b and also your 0 b, क्योंकि 0 हम consider नहीं करते. So if position is greater than equal to n plus 1 or position is less than equal to 0, that's it. इसमें आपका नेगेटिव भी हो गया, आपका इंडेक्स नॉट इंडेक्स पोजीशन 0 भी हो गया, क्योंकि पोजीशन 0 हमारा नहीं है, हमारा पोजीशन 1 से शुरू होता है. 2.1, सॉरी मैंने गलत लिखा. क्या गलत लिखा? गलत मीन स्टेपिंग गलत लिखा, सॉरी. फिर से लिख रहा हूँ. This is step 2 is else. 2.1 is if condition. If position is greater than equal to n plus 1, तो ऐसे भी करके भी कर सकते हैं, obviously. Position is less than equal to 0. Then 2.1.1 display invalid position and exit. ठीक है, nothing to do. Sir, बोलो. but when the position will be 0, sir, it is a valid, no? Yes, So in sir. 0, 10 this is stored. That is index 0, not position 0. Position I'm starting from 1. Na? Okay, sir. In a literature way, I'm considering the first element as position 1. Understood? Okay, sir. हाँ, आप बोल सकते हैं कि सर, can I consider index 0 as position 0 and I can write my program that way? Then it is correct. Okay, Understood? Yes, sir. But look, the client or the user who are going to use this one, obviously I have to write enough, like जैसे बोलते हैं
जब यहाँ हम कर सकते हैं शायद, या जहाँ भी पोजीशन हम मांगेंगे void main पे, that enter any position which is greater than 0. ठीक है? Okay, sir. That way you can do it. So that your user will understand that index 0 obviously हम कर रहे हैं, but उसको position 1 मान के चल रहे हैं. Okay, else 2.2.1. तो obviously एक loop लिखेंगे हम. So for I is equal to, so यहाँ ये शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, that is position, but index एक कम है position से, obviously I is equal to position -1, I is less than n, I plus plus, yes, 2.2.1.1. So now just a left shift, AI is equal to AI plus 1. And 2. No, not 2.3. not 2.3 लिख सकते हैं, not then 2.3 नहीं लिखेंगे, 2.2 लिखेंगे. n is equal to n minus 1. Step 3, stop and exit. Am I clear, guys? Is it clear? Yes. Or any doubt? Okay. So let me go to the next. Sure. Bolo. So once can you explain that line number 2.2.2? So n is equal to n minus 1, that one. What is n? So n is replaced by n minus 1, that one. No. What is n? I'm asking you. Oh, so n is the number of elements. So what we have done in this logic? So we have just shifted it to a plus 1. That But objective क्या है? Shift करने का objective क्या है? so उसको like वो shift अगर कर देंगे तो वो place फिर वहाँ पे vacant हो जाएगा. हाँ, but overall objective is deleting or not? Yes, sir. तो delete करूँगा तो n value कमेगा कि नहीं कमेगा? Yeah, yes, sir. Got it. हाँ. Okay, so next thing is searching algorithm. Okay, यहाँ भी हम linear search भी देखेंगे और binary search भी देखेंगे. ठीक है? First, let us see about the linear search. It's quite easy because we know that linear search is very sequentially. Okay, so algorithm directly देखते हैं because linear search तो आपको बहुत बार किए होंगे I believe. Linear search. So what I need an array, and obviously we are maintaining an n on our approach towards the array. That means the number of elements, because the array size may be 1000, but suppose you are storing only 100 elements inside that array. So I do not have to, while traversing the array, while searching the array, I do not have to go from 0 to 1000 or 0 to 999. No, not needed, because we have only 100 elements are there. So it should go 0 to 99. So this n is important, that is why. Then obviously I need to search the value or key or whatever you want to write it. This value I want to search. Okay, in the comments you can write it all these things. Step 1. So maybe some variables I need to declare. I will tell. So set I equal to 0 and position is equal to -1. Okay, why position is needed and why it is in the assigned a -1, I'll explain a little bit. Step 2, while I is less than n. So now I'm just changing my approach. Instead of writing a for loop, and let us try to accommodate a while in my algorithm. So that is why I have gone for while I less than n, or general it is written repeat while I is less than n. In general it is written this way, repeat what is used. 2.1, if a of I is equal to the value I am looking for, then
अगर ये ट्रू हुआ तो what I need to do, पोजीशन को मैं I में सेट कर दूंगा. Like I may got the element in the first index or second index or third index or any index. जिस इंडेक्स में मेरा मैच हुआ उसको मैं यहाँ पोजीशन में स्टोर कर दिया. ठीक है. Then 2.1.2 and you can display element found at, just this is a like the variable value need to be displayed, that is why I put it this way, element found at position, whatever. Okay, now step 3. Now suppose I am asking you, suppose the element we do not found, so what need to be displayed? Obviously a simple message, that is element not found, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How to display that? Can anyone tell? How to display? Directly else. PO position So, equal to 1. If P position PI is of not element- equal Sir, to value. and- Sorry, Sir, comment. directly we can use else. Sir. Yes, sir. else, देखो else यूज करने में प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जितनी बार while चलेगा उतनी बार दिखाएगा element not found, not found, not found. Not We can use an extra variable and do that. We can use No. if. Sir, we can directly Your write x is it. equals to Why minus should 1. we use anything? We can directly Write Someone- it. Write POS equal to -1, then Out of the while loop, we can directly write it. Because if condition is not executed. no. Sir, You- if position is not equals to -1, then then we is can show equals that. to -1. is equal Yes. to -1, then we That's can it. If It Yes. will be minus. वेरी गुड. देखो किसने शायद बोला, नाम तो पता नहीं, कि है डायरेक्ट लिखने से चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि एवरी टाइम ये तो मिल जाएगा और बाहर आके फिर से लिखेगा एलिमेंट नॉट फाउंड. एलिमेंट फाउंड भी लिखेगा, एलिमेंट नॉट फाउंड भी लिखेगा, अगर इसको डायरेक्टली हमने ऐसे लिख दिया. सो डायरेक्टली नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ एक पोजीशन इज इक्वल टू -1 लिया है. अगर मान लो कि एलिमेंट मुझे मिला तो पोजीशन का वैल्यू ऑब्वियसली नॉट -1, यस और नो? yes, sir. अगर ये लूप पूरा रोटेट हुआ और मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, तो एट दिस लाइन पोजीशन का क्या वैल्यू होगा? -1, sir. That's it. Just simple if condition is more than enough. The position is equal to -1, 3.1, display element not found. That's it. ये चेक करेगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा. अगर पोजीशन इज इक्वल टू कुछ मिला है, ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, सिंपली चेक करेगा और बाहर आ जाएगा. दैट्स इट. Am I clear? Yes, sir. Okay. So any doubt in this linear search? In the while loop, we have not incremented I. Like we have. हाँ ठीक है, वो लिखना पड़ेगा सर, ये भूल गए. 2.1.3 I is equal to, no रुको 2.2. ये if के बाहर रहेगा, सॉरी ये सर 2.2 में रहेगा. वेरी गुड, 2.2 में रहेगा. I is equal to I plus 1. Yes, thank you. Okay, so और कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. So this is my linear search. Now let us see the binary search, and I believe binary search शायद आप पहले नहीं किए हैं, कुछ कहीं भी शायद आपका पढ़ाया नहीं गया है. So मुझे थ्योरी भी पढ़ाना है और एग्जाम्पल भी आपको कराना है, उसके बाद एल्गोरिथम देखेंगे. ठीक है. So we all know that the prerequisite of the binary search is what? The array should be Sorted. Sorted. अगर कोई आपको अनसॉर्टेड array दे रहा है और आपको बोल रहा है स्पेसिफिकली sorted using binary search, तो remember, अगर ये compulsory to apply the binary search or binary search is advisable in that case also, I can say, because it is faster. So your D2 is to first sort the array. That means if the array is unsorted, then sorting algorithm has to be implemented first, then binary search you have to apply. You cannot directly apply the binary search, it will never work. So फर्स्ट शॉर्ट है तो ठीक है, अगर शॉर्ट नहीं है तो पहले शॉर्ट एल्गोरिथम लिखो, शॉर्ट कराओ, देन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज करो. सो द प्रीरिक्विजिट कंडीशन इज condition
before applying binary search is the array should be sorted. ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये डिपेंड करता है आपका अप्रोच के ऊपर, बट अगर आप असेंडिंग लिख रहे हैं तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बट उसका थोड़ा लॉजिक चेंज होगा. अगर आप डिसेंडिंग कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च का भी कॉन्सेप्ट वही होगा, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा. वो आप समझ जाएंगे. तो एक एग्जांपल मैं लगाता हूँ. ठीक है, तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ बाइनरी सर्च को. सपोज इन एन array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111. ठीक है, so this is the element stored. Obviously it is already sorted, it can be seen. ठीक है, now I can say here n is equal to 10. There may, it may be the array size is 100, maybe, I don't know, but I have stored only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elements, so n is equal to 10 in this case. Okay, let we are searching for, let it be, let the element is not there at all, for let's suppose 9. Okay, so let's suppose we want, as I said, we want to search the 9 inside this array. Okay, so what we need to do, there are two variables I need, that is beginning, another is end. In general, while starting the algorithm, the beginning is the first index, that is 0, and end is the last index, that is 9. So let me repeat. This is nothing but the first index. This is nothing but the last index having data. Okay, so it can be seen. This is 0, this is 9. So this is my, I can say here, this is beginning and this is end, initial. So beginning is a variable, end is another variable. Beginning is pointing to 0 and end variable is pointing to the last index, or it contains 9. So that we know. Now what I need to do, I need to find out the midpoint, and the formula is beginning plus end divided by 2. Okay, so in this case it is, so this is my formula, remember, and it is quite easy. Everybody can remember this formula very easily. So in this case, beginning is 0 and it's 9. 0 by 9 is divided by 2. So it is coming 4.5. So let's equivalent to 4. Doesn't matter. अगर आप इसको 5 भी करें, doesn't matter. ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर 5 करके मैं आगे बढ़ूंगा, गलत होगा, सही होगा, it is also correct. I don't mind. So let me take always the floor value, not the top value. Okay, or the ground value, whatever, mathematically it is there. So now what I need to do, now compare 9. Okay, so 9 is nothing but what I need to search. Compare 9 with A of mid. Okay, so right now, where is my mid? This is my mid. 4, sir. 455, sir. Yes, this is my mid. So that is 9. 9 is compared with 55. Because as I can say, as 9 is less than 55. 9 is less than 55. We conclude that
9 may appear, और फर्स्ट never appear में लिख लेता हूँ, 9 will never appear after 55 in the array, and it may appear, may because हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, may appear left of 55 in the array. Am I correct or not, guys? Yes, sir. Because we found that 9 is less than 55 and the array is sorted. So obviously it is impossible, I can say 9 will never appear here. So that means I do not have to focus on this part. I can completely ignore. I may or I have to focus on this part only. इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि यदि इक्वल नहीं हुआ तो ओनली विल फोकस दिस 11, 22, 33, 44. ओके, नाउ कंटिन्यू. ये खत्म नहीं हुआ बिकॉज इट इज, जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिलता है और खत्म नहीं होता है तब तक आप बढ़ेंगे. नाउ begin, the variable is very very important. Begin is 0 because you see, again I'm asking you, we need to focus on this part. सर आपकी आवाज लैग कर रही है. Okay, that is net problem. I cannot help, I believe. So now is it clear? Yes, sir. Yes sir, little bit. Yes sir. Yes, sir. Okay, so there is net issue. I cannot really figure it out, or I cannot help it out for the timing at least. Now I have to focus on this. If I need to focus on this, does the beginning value change here? No sir. No. Good. Sir. But does the end value change here? Yes, Yes, sir. sir. Mid Yes, sir. value. Yes, sir. It will be 4 sir now. Mid No, not 4. End is equal to mid. mid minus 1. Remember, which is nothing but 4 minus 1 is equal to 3. Am I clear? Because Yes, we sir. have already matched Yes, sir. this. तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको यहाँ इसको अंदर इसको फोकस रखेंगे. So this is not needed. So now again, the mid is equal to 0 plus 3 divided by 2, which is 1.5. I'll take 1. So compare 9 with a of 1, that is a of 1 क्या है आपका 22, that is Yes, sir. 9 less than 22. So again, search at the left of 22. ठीक है, तो फिर से now beginning value doesn't change, that is why 0. I repeat again, यहाँ हम सर्च कर रहे थे तो इसके साथ कंपेयर किए तो बचा क्या है, दिस प्लेस और नॉट. Yes sir. Yes, sir. Okay. So now beginning is 0, end is also 1 minus Zero. 1 is equal to 0. So compare and इसको आपको केयर करना पड़ेगा. Mid is nothing but 0 plus 0 divided by 2. तो obviously ये programmatically syntax error नहीं दिखाएगा, तो we need to check it. So again it is 0. But we know that like beginning अगर 0, end अगर 0 है तो obviously उसका कुछ mid point है ही नहीं, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. But one second. So compare 9 with A0, that is 9 is less than 11. So now beginning is 0, no changes, but end is equal to 0 minus 1 is equal to minus 1. And इसको हम programmatically care करेंगे so that it will stop. It means the element is
not in the array. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो इस पार्ट को हम प्रोग्रामेटिकली क्या करेंगे, आप देख सकते हैं वो प्रोग्रामेटिकली ये दिख भी जाएगा जब हम प्रोग्राम करेंगे. बट एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपका वैल्यू इज लेस देन a mid, it means end is equal to mid minus 1. बट उल्टा भी हो सकता है, वैल्यू इज ग्रेटर देन a Mid mid, plus 1. so beginning is mid plus 1, end नहीं, Sir. beginning is mid plus 1. Because you see, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, suppose we are looking for 200, so 200 is compared with 55, so obviously इस पार्ट में तो नहीं होगा, तो शायद इस पार्ट में हो सकता है. अगर इस पार्ट में हो सकता है तो end doesn't change, but आपको एक नया सब array मिला है जिसका end change नहीं हुआ, बट क्या चेंज होने वाला है? Beginning. So the beginning will So beginning is mid plus 1. So that is what I have written here. Beginning is mid plus 1. ठीक है? Now let us write the program. Algorithm binary search. So same thing, I need an array. Number of elements not needed, but अगर जरूरत नहीं बाद में उसको देख लेंगे. And obviously the value, this is much needed. And obviously array is the sorted one that we are taking it as granted before entering or before calling the binary search. अगर आपको input मिला है unsorted, you need to write a sorted algorithm, that is okay. But here I am taking as a granted that yes, you have written a sorting algorithm, you have called it, you sort the array and giving the data to this binary search. Step 1. तो कुछ वेरिएबल हमें चाहिए जिसको हम पता है, बिगिनिंग को 0 हम बोल सकते हैं. हाँ, n वैल्यू चाहिए ही चाहिए, बिकॉज end इज इक्वल टू n माइनस 1, n की जरूरत पड़ेगा, एंड पोजीशन इज इक्वल टू -1. ठीक है, वही कंसेप्ट में अप्लाई करूंगा. अगर पोजीशन और कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ तो शायद उसको प्रिंट करा सकता हूँ. ठीक है, लेट अस सी. स्टेप 2, repeat while beginning is less than end. Now I'll take a pause and ask you, now does this condition satisfy this thing or not? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Is beginning is less than end, तो beginning जब 0, end जब -1 हो जाएगा, ये false हो जाएगा. So जब तक ये 0 है, समथिंग इज देयर लाइक 0, 1, 2 जो भी बड़ा होगा. जैसे हमने देखा कि पहले आपका क्या था, ये 0 था, उसके बाद 9 था, उसके बाद ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बट at some point it becomes 0 and -1. So it means that 0, 9 has to true, 0, 3 has to true, 0, 0 has to true, उसके अलावा सब कुछ false होगा. That means less than 0 value. So this writing beginning is less than end satisfies my approach article. Then 2.1, I need to find out the midpoint. So beginning plus end by 2. तो program 4.5 को 4 करता, 5 करता, प्रोग्राम के ऊपर छोड़ दो. You don't have to worry about it. 2.2, if the value we are looking for is equal to a of mid, value शायद आपको मिल भी गया, then 2.2.1 position is mid because I got my element. 2.2.2 display element found at position. 2.2.3 मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो I can use a break statement here. ठीक है, so I can break because
मैच हो गया, नथिंग टू डू, जस्ट आउट ऑफ द प्रोग्राम. देन 2.3 else if क्या हो सकता है? द वैल्यू इज लेस देन then mid, ए मिड, ये हो सकता है. अगर ये ट्रू हुआ तो व्हाट आई नीड टू डू? and we have to change mid plus 1. Yes, and is equal to mid minus 1, not plus. Else 2.4.1, अभी एक ही कंडीशन बाकी है, that is beginning is equal to what? Mid plus 1. Mid plus 1. हो गया. तो स्टेप 3 उसके बाद लिखूंगा ऑब्वियसली, बट यहाँ तक क्या हुआ? एटलीस्ट देखो, अगर आप देखो बिगनिंग 0 हुआ था, जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है, 0 ये 9, मिड निकल गया आपका 4 या 3 व्हाटएवर, 4 हो गया, वैल्यू मैच नहीं हुआ, बट ये ट्रू हो गया. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर 9, तो इसलिए एंड इज मिड माइनस 1. सो मिड 4 था तो एंड 3 हो गया. तो फिर से इधर आ गए, तो 0 3 मिड निकाला, आपका 1 हो गया, नहीं मिला, फिर से वैल्यू ये मैच हो गया. सो एंड इज इक्वल टू 1 minus 1 0. सो नाउ इट इज 0, इट इज 0, मैच, ये मैच नहीं हुआ. ठीक है, तो फिर से वैल्यू मैच लेस हुआ, फिर से इसको रन हो गया, तो नाउ इट इज -1, इधर आया 0 -1, फॉल्स आउट ऑफ द लूप. एम आई क्लियर? Yes, sir. तो अभी मुझे सिर्फ पोजीशन को चेक करना है, तो चेक दैट एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं. अगर -1 स्टिल है, आई कैन सिंपली राइट डिस्प्ले एलिमेंट not found. Then step 4, stop and exit. That's it. My binary search is done. Any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, तो आप उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए. Okay, so should I go or any doubt? Sir, time complexity of this. हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस. आप बोलो क्या हो सकता है? लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? और लीनियर होगा ना? लीनियर होगा, बट बताओ बिग ऑफ क्या होगा? n, sir. Big of n. Big of n, because if there are n number of elements, there will be n number of comparison. ठीक है, तो बाइनरी सर्च का क्या होगा और क्यों होगा? एनीवन टेल मी. Big of Log log of base to n. बिग ऑफ Log base to n. log n. log n डायरेक्टली बोल सकते हो. Log n, हाँ. हाँ, सो बाइनरी सर्च का इट इज बिग ऑफ log n. बेस्ट बोलने की जरूरत नहीं है. तो ये कैसे हो गया? एक शायद मैंने कभी बताया था, मुझे याद नहीं है. अब देखो कितना फास्ट ये काम करता है. सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स, okay, 100 data. Now how the binary search will work? So we have already learned that the array size is getting divided into half if there is not a map. Yes or no? So 100 था, so एक बार हमने चेक किया मिडिल एलिमेंट के साथ. Now it is 50. सेकेंड बार जब चेक करेंगे, then it is 25, 25, 12, then 12, then 6, 6, 3, then 3, and 1. 3. then One. 1, and stop. So mostly there are 6 number of hits. Yes or no? 6 7 होगा, ठीक है. But you see this is nothing but अगर आप अगर log base to 100 करेंगे कितना होगा? 8. So that is coming here. Am I clear? Sir. This is the time complexity of binary search. तो जिसने पूछा था, any doubt? No, sir. No, sir. Now
let us move on to the next. एक sorting algorithm भी अभी देख लेते हैं, because sorting तो एक पूरा है. जोर से बोलो, जोर से बोलो. सर एक क्वेश्चन था बाइनरी सर्च वाले में. हाँ बोलो. सर अगर हम लोग बाइनरी सर्च वो ऐसा नंबर करें जो एंड में लाइक 1 1 2 आएगा और वो हमारे उसमें है नहीं एरे में, तो हमारा जो ये जो सेकंड कंडीशन थी वाइल वाली, बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, वो तो गलत हो जाएगी. बिगिनिंग फिर हमारी अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे और नहीं मिला तो बिगिनिंग हमारा एंड से बड़ा ही रहेगा. कैसे रहेगा बताओ, कैसे रहेगा तुम खुद बताओ. अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे और हमारा बिगिनिंग मिड प्लस 1 होगा, तो इट इज 09. ओके 09 वही सेम चीज करेंगे तो ये हो जाएगा 59. हाँ. यस और नो? यस सर. ठीक है, उसके बाद बोलो क्या होगा. 5 तो दिस इज 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू 5 अगर सपोज लेंगे. ठीक है, फिर 5 प्लस 1 बिगिनिंग हो जाएगा हमारा. हाँ ये सपोज, हाँ हमारा केस में 4 लेंगे, उसको 5 राउंड अप करें हम, उसके बाद ये बिगिनिंग हो जाएगा 4 प्लस 1 5. ठीक है. हाँ. तो अभी बोलो 5 इज लेस देन 9 ट्रू है. सो 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 7. ये हो गया 7 9. 7 इज लेस देन 9. यस और नो? यस. 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? 8. 8 9. 8 is less than 9. Yes or no? Yes sir. 8 plus 9 divided by 2 क्या हो गया? कोई 9 हो गया. Let's suppose 9 हुआ. ठीक है. 9 is less than 9. True or false? उसके बाद जो भी आएगा ये ट्रू हो गया, फॉल्स होगा? False. क्या आएगा बताओ? इक्वल टू भी है ना, लेकिन हाँ इक्वल टू में तो ट्रू होगा ना. हाँ. इक्वल टू तो ट्रू होगा, उसके बाद क्या होगा? फॉल्स. False. That's it. Am I clear? यस सर. Okay. Now sorting में हम देखेंगे, there are lot of sorting techniques. Bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, and और क्या है? Sir, count sort. Sorry? Sir, count sort. Count बोले ना? Yes, sir. Merge sort. हाँ, quick sort, then Merge sort. merge sort भी है, correct. Count sort क्या है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा. ठीक है. So let me आप अगर आपके पास अगर कुछ count sort का कुछ reference notes है मुझे दो, but these are the 6 popular sorting technique that we are going to see in our data structure. Bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, quick sort and merge sort. And out of this, quick sort is the fastest. अभी सब याद रख लो, कैसे उसको बाद में देखेंगे. Quick sort is the fastest. Okay. Now, so let us start from the bubble sort. ठीक है. So why this is called bubble sort or how the bubble sort works? Any idea? कोई बोल सकता है? Sir, it compares with each element. Then? And if its value is greater, sir, then it shifts, sir. Okay. Like first it will be comparing with the first Adjacent element. swiping. हाँ swapping देखो, swapping तो हाँ adjacent swapping is there. ठीक है, swapping तो हमें यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, but ठीक है, adjacent swapping is correct here. ठीक है. So let me explain what is the concept of your bubble sort. Let's suppose the elements are 11, 33, 10, 6, 32, 40, 5.
So these are the elements what I need to sort it. उसमें negative भी हो सकता है, but let us see about the positive numbers. तो उसमें generally some उसको pass में हम करते हैं, like pass 1, pass 2 में करते हैं, ठीक है? So what exactly is happening in the pass 1? I'm writing once again. So I'm suppose I'm considering in ascending, okay? So bubble sort that is in the ascending. So this is has to be in ascending. So now what I need to do, I'll compare 11 with 33. So now after comparing with 11 and 33, I'll conclude that 11 and 33 are in the perfect position. Yes or no? Do they need to be rearranged? No, No, sir. sir. So that is why no swapping. So I can say here, I will write it here, 11 is less than 33. No swap. So now 11, 33, 6, 32, 45. Now this 33, 10 has to be compared. So obviously I can say 33 is greater than 10 or not. So swap it. Am I clear? Yes, sir. So now it is 11, Sir. 10, 33, 6, 32, 45. So now what I need to do? 33 is compared to 6. So 33 is greater than 6. So swap. So that's it. 11, 10, 6, 33, 32, 45. So now 33 is compared to 32. 33 is greater than 32. So swap it. So now it is 11, 10, 6, 32, 33, 45. So now 33 is compared with 40. So 33 is less than 40. So no swap. So now 11, 10, 6, 32, 33, 45. So now 40 is compared with 5. 44 is greater than 5. So swap. ठीक है, तो अभी मेरा क्या है 11, 10, 6, 32, 33, 5, 40. ठीक है, so I have compared all adjacent elements and at a particular step I stop because no adjacent elements to compare. So you can see that the pass 1 of the bubble sort gives you the biggest element at its proper position. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. So here now I'll go to pass 2. So pass 2 may let me write it 11, 10, 6, 11, 10, 6, 32, 33, 5, 40, 33, 32, 5, 40. Okay, but I'm something put a bar here. Why I'm putting a bar here? Because अभी वही चीज मैं करूँगा. That is nothing but 11 is compared with 10. So 11 is greater than 10. So swap. I'll repeat the same thing जो मैंने किया था. So 10, 11, 6, 33, 32, 5, 40. So again 11 is compared with 6. 11 is greater than 6. So swap. So 10, 6, 11, 33, 32, 5, 40. So 11 is 33. So no swap, let me write, because we know why it is not being swapped. So 10, 6, 11, 33, 32, 5. I think it is 32, then 33. Yes, sir. It's 32 and 33.
अच्छा अच्छा ठीक है। पहले आपका 32 ना? Yes, sir. 32, yes, yes. So 32, 33, 32, 33, 32, 33. ठीक है। So no swap. Then 10, 6, okay, 11, 32, 33, 5, 40. So ये हुआ था, सभी ये भी हुआ. So again, no swap. Then 10, 6, 11, 32, 33, 5, 40. So 33, 5. 33 is greater than 5. So swap it. So now 10, 6, 11, 32, 5, 33, 40. ठीक है। नाउ ये एलिमेंट को अभी नहीं कंसीडर करेंगे स्वैपिंग के लिए, चेक करने के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी पोजीशन पे आ चुका है. दैट इज आई पुट ए लाइन हियर. नाउ कैन आई से आफ्टर पास टू the second biggest occupy its correct position? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it goes on like this. That means I'm not going right now. I'm not solving it. So pass 3 will happen. Pass 4 will happen. Now question to you guys: how many pass is needed here? सोच के 6 बताओ. pass. Pass, sir. 6, sir. पास 3 होगा, उसके बाद पास 4 होगा. ये कहाँ तक जाएगा? और अगर 6 Six पास तक. बोले तो Sir, total elements -1. yes, total elements Total Minus minus one. 1. yes. So it 6 will go only. to pass 6. That's it. So this is called as bubble sort. ठीक है? Am I clear about the working principle of the bubble sort or in doubt? Yes, sir. Clear, sir. Clear. ठीक है. So अभी इसका एल्गोरिथम हम देखेंगे. इस वर्किंग जो हमने काम किया उसका अभी एल्गोरिथम देखेंगे. अभी टाइम है. आज देखेंगे कल देखेंगे? सर आज ही दिखा दीजिए. ठीक. Sir, bubble shot देख लेते हैं. हाँ, एल्गोरिथम bubble underscore sort. So I need an array obviously, and the number of elements is needed because I cannot. The array size can be 1000 and there are 10 elements only. So number of elements is important. Step 1. Repeat while और now repeat for भी कर सकते हैं. Repeat for I is equal to 0 to n. 1.1 अगर ये 0 is less than n हुआ, then repeat. Remember this needed nested for loop. Yes or no? Yes, sir. For Yes, sir. j is equal to 0 to n minus I. Okay? n minus I क्यों हुआ, कोई बता सकता है अभी? 1 less than. हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि Pass सर लास्ट is पोजीशन last अपने वाले करेक्ट If the last is done, then the last one is not to be needed to be done. considered. Very good. अगर पास वन कंप्लीट हो गया मीन्स एक लूप कंप्लीट हो गया, तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो 0 से तो स्टार्ट करेंगे, लास्ट n-1 तक जाएंगे. जब 2 पास कवर हो जाएगा तो 2 बिगेस्ट एलिमेंट लास्ट तक आ गया, तो 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन n-2 तक करेंगे. सो ये इसी को लॉजिक को वर्क करता है. आई जितने बार आगे बढ़ेगा आउटर लूप, इनर लूप, उतनी बार एक आई वैल्यू को कम होता जाएगा. लाइक ये 3 बार हो चुका है, दैट मींस पास 3 हैज बीन डन. अगर पास 3 डन मींस ऑब्वियसली विजुअल यू कैन डू इट. विजुअल यू कैन थिंक that the biggest 3 number is in the last position, means
सीक्वेंशियली ऑब्वियसली, तो हमको n-3 तक जाना पड़ेगा बिकॉज वो तो 3 ऑलरेडी अरेंज हो चुका है. दिस वर्क इज डन बाय दिस n-i. देन 1.1.1 if a of j is greater than a of j plus 1, this is nothing but we are comparing, probably you can easily figure it out. 1.1.1.1 swap aj with a of j plus 1. Okay, now here you can write that 3 steps algorithm, like taking a temporary and swapping it. You may do it, but I may do it this way because this is a algo or a pseudo code. अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन ठीक से लाइक 1.1.23 लिख के अगर नहीं करूँ तो भी चलता है बिकॉज स्वैपिंग इज ओनली 3 लाइन एल्गोरिथम. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इफ कंडीशन हो गया, ये हो गया, आई गेस इट इज डन. फिर भी एक चीज मैं यहाँ केयर करता हूँ जानबूझ के, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूज होगा. दिस इज एंड इफ, लाइक ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ. 1.2 end of 1.1 लूप, तो यहाँ से शुरू यहाँ खत्म हो गया. स्टेप 2 end of स्टेप 1 लूप, तो यहाँ से इस लूप का स्कोप ये है. स्टेप 3 स्टॉप एंड एग्जिट. Am I clear? Quite easy. It's a very easy algorithm to sort the elements above all. But इस जो very easy algorithm का time complexity क्या है पता है? Sir, big of n square. Yes, very good. Big of n square. That is why it is so faster. Sorry, so slow. Or worst case is taking a lot of time. It is n square. Because you can easily see here. This is n times, and obviously this is in the worst case also n times, or some constant will happen. ठीक है, so ये big of n square आप निकाल भी सकते हैं because ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था. so frequency कांड भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप बोले कि सर ये n square है कि क्या है, आप कर सकते हैं खुद. I'm done, but any doubt ask. I have opened the chat box. You can write your roll number. But I am ready to take your doubts if you have any. Just 5, then 5 plus 6. No, just imagine. Side is किसने 6. doubt पूछा है? Yes. किसने doubt पूछा है? Sir, me, Pranab. Pranab. Okay. Just imagine it is filled 10, 6, 12, 20, 30, 40. ठीक है ना? Yes, sir. Now can I insert anything? No, sir. You can't. So this is the condition to check that. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. Size देखो ये n and size both are two different things. उसको अगर समझ में आ गया तो ये क्लियर हो गया. Size is different because size can be 100, n can be 10 only. So suppose your array is completely filled because मैंने कल क्या बोला था? Suppose this is the condition. Can I put an element here in this position? Yes, sir. I take it as a valid position. It is also n plus 1. ठीक है, तो अगर पूरा आखिर तक आ जाता है और उसको भी n plus 1 में करूंगा तो ये तो ओवरफ्लो हो गया ना. Yes or no? Yes, sir. इसलिए उसको मैंने अलग से चेक किया. So और किसका डाउट है? रोल नंबर सारे लिखे. Should I close the class? Excuse me, आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या सर? पूरा लास्ट? यस सर. सर यहाँ पे तो हम लोग को एक कंडीशन डालना पड़ेगा ना कि n हर बार कम हो रहा है so that repeat for this is taking care ना n minus I. बट सर वो तो -1 तक. मान लीजिए हम लोग के फर्स्ट लूप में 1 पे हम लोग का n का वैल्यू 5 है तो फिर सेकंड वाले में
n 1 से 5 के बदले 1 से 4 तक होगा। But नहीं फिर- नहीं, देखो हमारा ऐसे काम करता है। सपोज देयर आर, पहले हम जाते हैं 0 to 5, करेक्ट ना? सपोज 5 इंडेक्स तक है हमारा, करेक्ट ना? यस सर, तो सेकंड बार 0 से 4 जाते हैं, यस सर। उसके बाद 0 to 3 जाते हैं। ओके, तो जो अंदर वाला लूप है वो 0 to हाँ, जी 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 यस ठीक, थैंक यू सर। ओके यस टेल। सर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर वाला और एक बार समझा देंगे, मतलब कैसे हो रहा है वो प्रोसेस? अरे नहीं, आप बोलो कैसे हुआ, मैं तो समझा दूंगा, बट मैंने तो फ्रीक्वेंसी काउंट आपको बताया था ना, ये सर नो? हाँ सर, वही बोला मतलब। हाँ, उसको अप्लाई करो, आप बताओ ना इसका टाइम कंप्लीट, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट ये बताओ मुझे। i = 0 से n का n होगा। इसका क्या होगा? सपोज 0 लेस देन n जो भी है, सो n+1 होगा तो n बार 2 होगा, एक बार फॉल्स होगा। ये सर नो? यस सर। ठीक है, तो इसका क्या होगा अभी मुझे बताओ। n कैसे n निकाला? मतलब n नहीं, बिकॉज इट इज अ नेस्टेड फॉर लूप, तो ऑब्वियसली ये n तो नहीं होगा, क्योंकि ये होगा n into something, करेक्ट और नॉट? यस सर। क्योंकि ये n बार ट्रू हुआ, तो ये 0 to n माइनस आई जाएगा, बट n टाइम्स रोटेट करेगा कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझे, शुरुआत में मैं बता दूंगा। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑल, सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। देयर इज अदर वे, इजी वे टू फाइंड आउट। अगर डिपेंडेंसी लूप है, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। शुरुआत में बता देना कि सर ये टाइम कंप्लीशन पर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है सर। ओके, ठीक है, सो आई एम डन। So all you can leave, and let me close the classroom. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Welcome.